little is known about the children who spend a few years of their lives behind the impossible walls of central jails in Sindh. They pass through the indifferent maze of the juvenile justice system, unidentified except as a case number. Often seen as criminals rather than victims of circumstance, their rebellious spirits are quelled by brutal jailers, exploitative lawyers, and unsympathetic judges. If the system aims at reforming these children, it only manages to break them. While their ideas on life or their understanding of ethics may not be enriched, they will have learned how to go about unnoticed, mere shells of their former beings. Returning to face the judgment of a critical society, these children carry their silence and anonymity with them, choosing to hide the past they cannot forget. Years later, seeking employment or extending a marriage proposal, they will be stamped as former convicts rather than as errant children and held at arm's length. Shunned by society and haunted by memories they cannot avenge, theirs is a lifetime sentence, a burden they will carry to the grave. जेल जी माहौल अहिड़ो आहे जो माण्हू खे ख़ुदि बदिलाए थो छॾे। ॾाढो ॾुखियो माहौल आहे, बहुत तकलीफ़ होती, टाइम बहुत तकलीफ़ से गुज़रता था। ॾींहं आख़िर ताईं गणियासीं, हिकु हिकु ॾींहुं तकलीफ़ जो हुयो। उते सहूलियत काई बि न हुई, हिकिड़ी शइ त काई इंटरटेनमेंट न आहे त को उते हिकु हिकु ॾींहुं हिकु हिकु टाइम पुछंदो आहे। घणा ईअं थींदा आहिनि त अंदरि उन माहौल खे ॾिसी तंग थी माण्हू ॿाहिरि उहो अची घणो ख़राब थो थिए। Once a cultural hub for Sindh's wealthy merchants, the town of Shikarpur is marked by winding lanes graced by beautiful architecture dating back to the early 19th century. It was here, in 2005, that 17-year-old Dev Chauhan was framed in a murder case of a distant relative outside a Hindu temple. It was a case of being in the wrong place at the wrong time. While the evidence may not have added up entirely against him, the crime was pinned onto Dev because he was the most likely suspect. Maintaining his innocence until the very end, he spent a year locked up in Central Prison 2 in Sakkar until the actual perpetrator of the crime was discovered. असां त पहिरियों ई वञण खां पैसा ॾिनासीं, बाक़ी जेके ग़रीब क़ैदी हूंदा उन्हनि सां ज़ुल्म कयो वेंदो। उहो लकड़ा हणंदा हुया उन्हनि खे सुम्हारे करे या कपिड़नि खां आजो करे उन्हनि खे कुटींदा हुया सभिनी क़ैदियुनि जे साम्हूं। जिते क़ैदियुनि सां नंढा छोकिरा रहंदा आहिनि उहा उते शइ थींदी आहे। सिपाही पाण पैसा वठी शाम जो पुॼाईंदा, सुबुह जो वापसि वठी ईंदा आहिनि। उहे ज़हनी तौर अपसेट था थी वञनि। ॿ टे क़ैदी अहिड़ा हुया, पठाण हुया जेके चर्स जे केस में हुया हुते, उहे हिकु ॿ ॼणा बाक़ी सफ़ा मेंटल थी विया हुया। छोकिरा हुया 16-17 सालनि जा, उनखे नशे जूं टेबलेट ॾेई उहा शइ कई वई। उनखे अस्पताल खणाए विया, सखर अस्पताल। पोइ आयो असां सां रहे पियो, पोइ उन ॿुधाए पियो नशे जूं गोरियूं खाराए उनखे। उहे ई हुया 2-3 क़ैदी जंहिंजो कोई मिलण ई न आयो 2-3 सालनि में। 4 years may have passed since his release, but the details of Dev's experience remain fresh in memory, never to be appeased by either vengeance or forgiveness. असांजा पंहिंजा ई हुया दीवान, जीअं असांजे मथां इल्ज़ाम हुयो। उहो कानून हुजे हा त उहो असां सां ईअं न थिए हा न। मैं तो बेगुनाह जेल में गया था, मेरा तो कोई भी दोष नहीं था। असली जवाबदार में पुलिस को हथ ई नथी विझे, जेके नाहक माण्हू उन्हनि खे चालान करे जेल मोकिलियो थो वञे। असां पंहिंजे अलाह ते रखी आहे, जीअं असां सां माना नाहक कयो आहे उहो उन्हनि सां पलव ज़रूरु वठो। In the interior of the province, it is not uncommon for crimes to be wrongly pinned on members of the same caste, community, or tribe. Here, the brotherly system often takes precedence over the Pakistan Penal Code. This informal system of justice, based on tribal alliances, can force juveniles like Dev to face unjust punishment, which at times is harsher than the provincial law would decree. According to the Brotherly Code, both adult and child offenders are subject to the same ruthless whims of tribal elders, whose writ cannot be questioned. Atiq Memon has spent 11 years inside of Sakkar's central prison's daunting ramparts. For 11 years he has watched patches of sunlight enter quietly through windows built high into the bulwark of the building,
patches of sunlight that would intensify, elongate, and wane as the day gave way to dusk. Over a decade has passed since he has seen a bird traverse an endless expanse of open sky, or has felt the midday heat searing the back of his neck. A decade that has carried him through boyhood, from a cracking voice, irrepressible rage, and uneven facial hair, to the remorseful contemplation of a young man who finds solace in faith. बस अल्लाह माफ़ी दे इंसान है, ये नहीं है कि मुझे इस जुर्म की सज़ा मिल रही है, गुनाहगार इंसान है, किसी क्या पता है ना, तो अल्लाह बेहतर ही जानते हैं, ऐसे तो गिला खुदा से क्या बंदा कर सकता है। बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अब उसकी जो है रिहाई हो जाए तो बेहतर है। अब हम भी तंग आ गए हैं, 11 साल भाग भाग के उसके तरफ इधर उधर तंग है। अल्लाह अपना करम करे। इन बातों को कर करके ऐसा घुन लग गया है, वो बता रहा हूँ ना, कैंसर, ऐसा कैंसर लग गया हमें कि ना वो मरने देता है ना जीने देता है। On February 11th, 1999, Atiq Memon was 14 years old when he allegedly killed his cousin, Zahir Ahmed, by firing a hunting rifle into his cousin's chest. The murder supposedly took place 2 weeks after the two boys had exchanged some angry words. That the crime was committed within the Baradari complicated the case beyond repair. मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बता रहा हूँ तुम्हें सही बात कि किसी ने इन दोनों को सिवाय इन दोनों के किसी ने देखा ही नहीं था उनको। ये सब गवाह भी झूठे, फरियादी है वो भी झूठा है, किसी ने देखा नहीं था। हाँ, हम उम्र थे, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई फसाद नहीं था, कोई बात नहीं थी। भाई भाई थे, पता नहीं उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये उन दोनों के अलावा किसी को पता ही नहीं। और जब हम शिकार के लिए गए थे तो शिकार में होते हैं कारतूस छोटे, है ना, वो पतले होते हैं, तो ये उसमें डला हुआ था मोटे वगैरह कारतूस। जब वो बैठे थे उसे खुद ही लगाए वो कारतूस, है ना। तीसरे दिन चौथे दिन पे मेरे बड़ों ने कहा भाई वो अभी नहीं मानते कोई भी बात, है ना, वो कह रहे हैं कि तुम ही हो, है ना, चलना है तुम्हारे को। मैंने कहा जैसे आप बड़े हो, जैसे आपकी मर्जी, माँ बाप से तो कोई दूर नहीं जा सकता ना। ये चाचा हैं सखर में, ये सखर से आके वहाँ आके FIR उन्होंने कटवाई। जो लड़का फोत है उसके बाप ने नहीं FIR कटवाई, है ना। तो वो कह रहा था हम आपस में अगर ऐसी कोई बात भी है तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, जो मसला होगा वो जाहिर ही हो जाएगा, है ना। बाहर रहेगा तो पता चलेगा, अब वो अंदर चला जाएगा, अब उसको ढकवा दोगे जेल में तो क्या पता चलेगा। इनसे हमने सबसे कहा भाई हम भाई आपस में रहें, लड़के के लिए जैसे तुम कहो वैसा करें, जिस तरीके से जो तुम चाहो हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अब जो कुछ हो गया है ये वापस तो नहीं आ सकता। अब एक की तो ज़िंदगी गई, दूसरे की भी बर्बाद कर रहा है। वो हमारे भाई हैं और नहीं है, और उन्होंने हमारे साथ में कुछ नहीं किया। हमने उनके साथ में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं मैंने कि सबको पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, उनको खिलाया पिलाया, नौकरियाँ दिलवाई, ये किया वो किया। एकदम ये सारे एहसान उन्होंने इस तरीके से बर्बाद कर दिए कि बस क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे हूँ 11 साल हो गए हैं, पीछे वाले साहब हैं बूढ़े, वो उसकी कोई मानता नहीं है बात, है ना। वो कहते हैं आपके बेटे ने कत्ल किया है, कत्ल का बदला कत्ल ही है। बदला क्या लें, किससे लें? वो भी औलाद है हमारी, वो भी हमारे भाई, हम किससे बदला लें? इसी में तो हम फंसे हुए हैं। बदले वाली जगह होती तो कभी का हो जाता।